Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. How are you? Hope you will be fine and enjoying the blessing of Almighty Allah. First of all, I would like to discuss what is the test. Tests refer to the type, to the tools, techniques, and methods that are devised to measure the intended learning outcomes of the students, to measure the knowledge of the students. There are many types of tests. First of all, we would see what is the purpose of classroom test. Test can be devised, used for the variety of instructional purpose. It means that the test which is used for the instructional purpose has many objectives, have many goals and aims. First of all, we will see what is the major purpose of the test. Number one, to determine whether the test have whether the students have prerequisite skill needed for instruction. To determine either the student have got the basic skill which is needed for the instruction. Number two, to determine the students, which students to extent to which students have already achieved the objectives. Number three, to provide the base for formative assessment, like monitoring learning process, to detect misconception, to encourage student study, and to provide feed both to the students and teachers. At the end of the instruction, it is used for student feedback. Performance standards have been achieved, encourage students to undertake more challenging advanced tasks, assigning of the remedial work, and last to award the grades. In a nutshell, the purpose of classroom test is very simple. First of all, it measures either the student have got the prerequisite skills. Number two, either the student have achieved the learning objectives, intended learning outcomes. Number three, what are the formative assessment, what kind of difficulties, what kind of uh, progress of the student during the learning, and at the end, it provides feedback both for the students and the teachers. तो लेट मी स्पीक इन उर्दू नाउ. टेस्ट का बुनियादी मकसद ये होता है कि हमने ये जांचना है कि ईदर स्टूडेंट्स ने अपनी बेसिक स्किल्स जिसके लिए उनको क्लास में एडमिशन दिया गया था या क्लास की एडमिशन के वक्त जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे, क्या स्टूडेंट ने उनको अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया. नंबर टू, क्या स्टूडेंट जो है या बहुत टीचर्स जो हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं ड्यूरिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस. फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस. एंड नंबर थ्री, व्हाट आर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट. उनको कौन सा ग्रेड जो है वो हमने अवार्ड करना है, कौन से लेवल पे रखना है, जो हमने ट्रीटमेंट दी है, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट ट्रीटमेंट. तो हमने कौन से काम उनके साथ करने हैं. एट द एंड हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोसेस था, क्या हमारा प्रोसेस वो स्मूथ चला है या नहीं चला. एट द नेक्स्ट स्टेज, there are two types of test. First of all, we will discuss objective test items. Objective test items, what are the basic characteristics of objective test item? These test items are highly structured, having single right and best answer. Two major characteristics of objective type test item. Number one, highly structured means it are the standardized as per the structure of required criteria. Number two, these have the objective items, means the student have no option to write from the yourself. Its basic right is to judge either the student have got the basic knowledge about something or not. And the objective type test item has the following four major types. Number one, short answer test item. Number two, true false test item. Number three, matching exercise test item. Number four, MCQs test items. लेट मी स्पीक इन उर्दू. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम, हमारी दो टेस्ट आइटम टाइप्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम जो हैं, इनकी जो बेसिक दो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि एक तो हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं और दूसरा इसमें एक ही बेस्ट और राइट आंसर जो है वो स्टूडेंट को देना होता है. तो इसकी फर्दर फोर टाइप्स हैं जो मेजर हैं. इसमें शॉर्ट आंसर टेस्ट आइटम्स हैं, ट्रू फॉल्स टेस्ट आइटम्स हैं, मैचिंग एक्सरसाइज टेस्ट आइटम्स हैं और MCQs हैं. Now we will discuss short answer test items. Short answer test items
Short answer test and completion, it is called both short answer and completion type test item. Both are supply type test item. It means the student have to write from him or herself, answer by words, phrase, number, or symbol. It means this is a short paragraph which the student, for example, to define something, the students have to write from within himself or herself. It has the following advantages: easy to construct, it measures simple learning outcomes, it recalls the memorized information. Means the short answer test items are very easy to construct. It measures simple learning. When the teacher want to measure the simple learning or want to check the rote memorization of the student, such kind of test item can be used. Its limitation: unsuitable for measuring complex learning outcomes. Means teacher cannot judge the complex learning outcomes, and it is very difficult to score. If the short answer test item is based on 4 or 5 marks, then it is very difficult for the invigilator to score the reasonable marks. लेट मी स्पीक इन उर्दू. शॉर्ट आंसर और कंप्लीशन टाइप टेस्ट आइटम जो हैं, इनको सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम का नाम भी दिया जाता है, और इसका स्टूडेंट्स को जवाब देना होता है वर्ड्स में, फ्रेज में, नंबर्स में और सिंबल्स में. और इसके जो एडवांटेजेस हैं कि इनको बनाना बड़ा आसान होता है टीचर के लिए. अगर आपने रोट मेमोराइजेशन यानी आपने रट्टा चेक करना है स्टूडेंट का, अगर आपने सिंपल लर्निंग आउटकम चेक करनी है, तो ये टेस्ट आंसर बहुत मुफीद होते हैं. और इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स को मेजर नहीं करते और इनको स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. नंबर 2, ट्रू फॉल्स और अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स एटम्स. It consists of declarative statement that the student is asked to mark true, false, right, wrong, yes, no, correct, incorrect, agree, disagree. These are the some types of test item true, false, in which the following things will be used, like the student asks to mark the true, or either the statement is a true or the statement is a false, either the statement is right or the statement is the wrong, either the statement is yes or no. These are some type of true false test item. True false test item was firstly divided in 1991 by Abel and Frisbee. These are the advantages. It is used to measure the correctness of the statement of fact, means when you want to check the fact of something, definition of terms, statement of principles, and easy to construct. And moreover, the main advantage that these are also easy to construct. These are time efficient, measure broad range of verbal knowledge as well as wide sampling of course material is obtained. These test items are time efficient, means within limited time you can measure the maximum learning outcomes. Its limitations: it is not useful beyond the knowledge area. These are also very effective for the knowledge area. It is vulnerable to guessing, mean the student more guessing work is recorded in true false test atom. Let me speak in Urdu. जो ट्रू फॉल्स टेस्ट एटम हैं, ये डेक्लरेटिव स्टेटमेंट होती है कि स्टूडेंट जो है उसको कहा जाता है कि आप ट्रू फॉल्स राइट रॉन्ग में से कोई एक सेलेक्ट करें, और इसको एबल और फ्रेस्बी ने 1991 में जो प्रपोगेट किया था. इसके जो एडवांटेजेस होते हैं कि इसमें फैक्ट को चेक किया जाता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स के पास कि नहीं है, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ टर्म देखी जाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल देखे जाते हैं, और इनको बनाना भी बड़ा आसान होता है, लाइक शॉर्ट आंसर टेस्ट आइटम. और इनमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये टाइम एफिशिएंट होते हैं, तो इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा वर्बल नॉलेज जो है उसको मेजर किया जा सकता है. ये भी नॉलेज एरिया से ज़्यादा कुछ चेक नहीं करते, और इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि गैस वर्क जो है बहुत ज़्यादा काम करता है. Now here are the matching exercise. The matching exercise consists of two parallel columns with each word, number or symbol. At one column, the statement is called premises behind match with words, member or sample responses with each column. At the column at the left hand is called premises, and column at the right hand is called responses. The task of the student is to identify the pair of atoms. Just it is the task of the student that they have to match the exercise from premises to response. The matching exercise illustrates an imperfect match, more named in column B. One name may be used more than one time. It means it is vulnerable to the test maker, that the matching exercise illustrates an imperfect match, means you can
put more words in column B or less words in column B or more words in column A or less words in column B. It is up to the test maker. It is limited to measuring factual information based on simple exercise. This is very simple and you can use it at elementary or means primary level. It is used to identify relationship between the two things. The student have the capacity to identify the relationship between two things. It is compact and efficient method of measuring such simple knowledge. It is very compact and measure the simple knowledge. It measures a large amount of related factual material in short manner. It is easy to construct but requires a high degree of skills. It is very easy to construct and it requires a high degree of uh, uh, skills to construct. Its limitation, it is only restricted to measurement of factual information. It is also limited to factual information. Let me speak in Urdu कि मैचिंग एक्सरसाइज जो है ये बुनियादी तौर पे दो कॉलम पे मुश्तमिल एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कॉलम ए को आप प्रीमिसेस का नाम देते हैं, कॉलम बी को आप रिस्पॉन्सेस का नाम देते हैं। तो कॉलम ए जो है टास्क ऑफ द स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि हम पेयर ऑफ एटम्स जो है उनको मेजर करते हैं। मीन स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि प्रीमिसेस से जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके साथ उनको मैच करें। और अगर हम एलिमेंट्री पहली और दूसरी जमात में देखें तो स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप एरो के निशान के साथ इनको आपस में मिला दें। तो इसके यूजेस जो होते हैं कि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। इसमें जो है वो रिलेशनशिप जो है उसको भी देखा जाता है और सिंपल नॉलेज को मेजर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है ये चेक किया जा सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें भी हम सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसको मेजर कर सकते हैं। नाउ हेयर आर द MCQs टेस्ट एटम्स. Multiple choice atom is recognized as the most widely used and useful type of objective test atom. MCQs जो हैं उनको सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ किया जाता है। It measures simple as well complex learning outcome. It consists of problem and list of suggested solution. The problem statement is called stem of an organization. The student is asked to requested to read the statement and select the best one correct alternative. Among the alternatives, the correct alternatives are called distractors. It means the MCQs are those test atoms in which there are one statement that is called the stamp, and each statement has 4 or 5 alternative answers. The students are asked that they have to pick from the one of those alternatives. The correct answer is called alternative, and the students which are wrong, that is called distractors. Its advantage, it is one of the most widely applicable test atoms for measuring achievement. It measures various types of knowledge and complex learning outcomes. It is free from response set. It is easier to construct high quality test atom. The more advantages of this that the MCQs are mostly widely used in the world. It measures from basic information to complex learning outcome. And it is easier to construct high quality test atom. Everyone you can use from class 1 to PhD level, you can use MCQs test atom. Its limitation, it is also limited to verbal learning outcomes. It also requires selection of correct answers. It is difficult to find out sufficient number of incorrect and plausible distractors. लेट मी स्पीक इन उर्दू. MCQs टेस्ट एटम जो हैं ये बुनियादी तौर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले अथेंटिक टेस्ट एटम्स है. इसमें आप सिंपल टू कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम चेक कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि आप एक स्टेटमेंट देते हैं और उसके आगे 4 आंसर्स होते हैं. स्टूडेंट को कहा जाता है कि स्टेटमेंट पढ़ के आंसर में से एक करेक्ट आंसर जो है उसका जवाब, करेक्ट आंसर जो है उसको मार्क कर दें. जो करेक्ट आंसर होता है उसको अल्टरनेटिव कहते हैं और जो इनकरेक्ट होता है उसको हम जो है डिस्ट्रैक्टर कहते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें आप सिंपल टू कम्प्लेक्स हर किस्म की लर्निंग आउटकम चेक कर सकते हैं और इसके लिए जो है वो हाई क्वालिटी टेस्ट आइटम जो बनाने हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है. और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमें प्लॉजिकल डिस्ट्रैक्टर तलाश करने बहुत मुश्किल होते हैं. थैंक यू वेरी मच. होप यू विल एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन. अल्लाह हाफिज़.